Hello. Hi, Krishna. Are you there? Hello. Udesh, sir, am I audible? Yes, yes, yes. Krishna, your voice is not clear. Am I audible now, sir? Yes, 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 yes. A second. A very warm and scintillating evening to one and all present here. Today, on 11th September, we are gathered in this wonderful workshop for a very great purpose. As a teacher, जब मैं क्लास में पढ़ाने जाता हूँ, तो I have seen students. They are very curious to know things. They wanted to build something big. They wanted to innovate. But their interest in books is not that कि वो कहीं ना कहीं बुक्स से दूर भागने की कोशिश करते हैं. They are curious, they want to build things, लेकिन जो उनका बुक्स के साथ इंटरेस्ट है वो उतना नहीं रहता. When I was watching the live telecast of ISRO's soft landing on moon, I basically felt कि जो चीजें यूज हुई हैं, साइंस यूज हुई है, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के तौर पे हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. तो आई थॉट ऑफ अ वर्कशॉप जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करके द एंटायर चंद्रयान 3 मिशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. तो विद दिस ग्रेट थॉट वी कोलैबोरेटेड विद various like-minded institutions. The first one is Hindu College, Delhi University. I am greatly honored to welcome Assistant Professor Dr. Amit Tanwar, who is currently working in Department of Physics, Hindu College. He will be sharing his insight regarding the entire process of Chandrayaan 3 mission. We are also joined by Star Lab founder Sunny. So he basically is in rockets education, or we can say space education, for almost more than 8 years. So with his expertise we would like कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू हम पूरी प्रोसेस समझा. इसके अलावा इस पूरी जर्नी में ये जो हमारा आइडिया था कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसमें वेरियस एनजीओज हैज कोलैबोरेटेड विद अस. मेनली जो हमारा एफर्ट्स हैं वो जो हमारे सीनियर पार्टनर डॉक्टर उपदेश वर्मा सर हैं, ही इज आल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गाजियाबाद गवर्नमेंट कॉलेज. तो ये नीव के
नेशनल कोऑर्डिनेटर है. नीव इज बेसिकली नेशनल एजुकेशन एनरिचमेंट इन विलेज एंड ट्रस्ट बेसिकली विच सपोर्ट एजुकेशन इन विलेज. तो मैं अभी इनवाइट करूंगा डॉक्टर उपदेश वर्मा को, क्योंकि ये पूरा जो वर्कशॉप पॉसिबल हुआ है वो उनके सपोर्ट के और इनके थ्रू जो हमने कोलैबोरेशन गेन की है. क्योंकि अभी हमारे साथ गेस्ट ऑफ ऑनर में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई के भी एलुमनाई है. तो कहीं ना कहीं उसमें इस वर्कशॉप को एक बड़े रूप में हम लोगों तक पहुंचा सकें, इसमें डॉक्टर उपदेश वर्मा का काफी बड़ा अहम योगदान है. तो अपने पार्टनर्स को वेलकम करने के लिए और सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर उपदेश वर्मा कि वो कहीं ना कहीं वेलकम स्पीच के साथ बाकी पार्टनर्स को वेलकम करें. ऑल्सो इफ पॉसिबल सरस्वती वंदना के साथ भी हम लोग इस सेशन की जो शुरुआत करना चाहेंगे. तो अगर पॉसिबल हो आप प्लीज सर सरस्वती वंदना भी प्ले कर दीजिएगा. Thank you. Thank you and welcome to all. Sorry. So welcome you all to this most awaited workshop, especially designed for science curiosity, जिनके अंदर भी रहती है कि स्पेस में क्या चल रहा है, क्या होता है, चंद्रयान क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चा करेंगे. तो जैसा कि कृष्णा ने बताया कि हमारे साथ काफ़ी पार्टनर्स हैं. MMH कॉलेज है, एक मिनट, MMH कॉलेज है मोदी नगर. हाँ मैं डाल राघवेंद्र सर आप चिंता मत करें, मैं डाल दूंगा. सो हमारे साथ है MMH कॉलेज गाजियाबाद. उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो वो हमारे पार्टनर हैं आज के. फिर साथ ही साथ जस्ट ए मिनट, देयर इज ए सम जस्ट ए मिनट. ओके, सो हमारे जो साथी है, पार्टनर्स हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं. हमारे साथ MMH कॉलेज गाजियाबाद है जो हमारा पार्टनर है. उसके साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है. UIT RGVP शिवपुरी का कॉलेज है जो कि अभी कुछ ही समय पहले स्टैब्लिश हुआ है, वो हमारे साथ पार्टनर है. मान्यवर काशीराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजियाबाद, वो हमारे पार्टनर है. नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, वो हमारे एसोसिएट पार्टनर्स है. मेरठ कॉलेज मेरठ है, मेरठ का सबसे बड़ा कॉलेज है, वो हमारा पार्टनर है. नीव है जो मैं हूँ उसका कोऑर्डिनेटर. फिर रघुनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, मेरठ में काफ़ी बड़ा कॉलेज है गर्ल्स के लिए, वो हमारे पार्टनर. टुगेदर भी टीम है, स्टार है, और डिफरेंट स्कूल्स भी हैं जो हमारे पार्टनर्स हैं इस वर्कशॉप के लिए. तो मैं सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ, स्पेशली अमित जी,
जो हिंदू कॉलेज से हैं, वैष्णव कांत है जो स्टूडेंट हैं, जो आज कुछ हमें बताएंगे, आदित्य जी हैं जो मेरे सीनियर भी हैं और आईआईटी दिल्ली से हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं स्टेम एजुकेशन में, उनका भी स्वागत है। स्पीकर है सनी जी जो कि स्टार लैब्स के फाउंडर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णा है और रत्नेश मिश्रा है जो IDYM के फाउंडर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो साथ ही साथ मैं अपना थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हम लोग भी जो नीव के थ्रू है वो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। तो उसमें हमारा ये 2018 में आईआईटी के कुछ एलुमनाई थे, उनके साथ मिलके ये इनिशिएटिव शुरू करा था हम लोगों ने कि कैसे हम स्लम एरियाज में, नॉर्मल एरियाज में हम जाके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे ऑफिस बियरर्स हैं नीव के। मेन एम जो है नीव का वो यही है कि हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कैसे एनरिच कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन से स्लम एरियाज को, ट्राइबल एरियाज को या विलेज एरियाज को। हमारा विजन भी ये है कि if poor cannot come to education then education must go to them और make every Indian educated, aware about duties and rights, make India and its people self-reliant। ठीक है, हमारा मिशन है। हम लोगों ने कोविड ड्यूरेशन में बहुत सारे काम करे, जैसे इंडिया का पहला जो मास्क था कवच नाम से, वो IIT दिल्ली के ही हमारे साथी हैं डॉक्टर विपिन जी, उन्होंने बनाया था। तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने इसे पूरे देश में वितरित करा इस मास्क को। कुछ लोग थे जो स्टैंड बाय हो गए थे, उनके साथ हम लोगों ने काफी हेल्प करी। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कोडिंग कक्षाओं को एक अनिवार्य करा गया है कि 6th क्लास से ही हमें कोडिंग सीखनी चाहिए। तो स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने कोविड की कक्षाएं स्टार्ट कर रखी हैं। कुछ हम विलेज में जो अध्यापक हैं जो कार्य करते हैं उनके साथ हम काम करते हैं कि जैसे स्कूल विज्ञान की बात, स्कूल के अध्यापक के साथ हम लोगों ने काफी ऐसे वेबिनार्स स्टार्ट करे हैं। कुछ चीजें हमने कोविड में ऐसी भी बनाई हैं कि जिससे कि जैसे हम लोग एक मशीन डिजाइन करी थी IIT के एलुमनाई और हिंदू कॉलेज के एलुमनाई ने मिलके, कि जो कि एक UV सैनिटाइजेशन मशीन है, जिसमें अगर थोड़ा 30 सेकेंड्स 1 मिनट के लिए अगर कुछ हम कंटेमिनेटेड अपना वॉलेट है, कुछ भी चीज है, ऐसी चीज रख दें तो वो उससे कोरोना वायरस या कोई भी वायरस है वो दूर हो जाता था। उसका पेटेंट भी हम लोगों के पास अब आ चुका है। तो ऐसी चीजें हम धीरे धीरे करते रहते हैं। नीव का काम का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी यही करा था नवंबर 2020 के एडिशन में। हम लोग डिफरेंट मुख्यमंत्री से भी वार्तालाप करते रहते हैं। जैसे दिल्ली में काफी पराली से पॉल्यूशन होता था, तो उससे हम कैसे सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बाकी मुख्यमंत्रियों से भी बात करी कि कैसे हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम डिफरेंट वेबिनार्स हैं हमारे, उसमें हम लोग करते रहते हैं। कुछ चीजें हैं कि फ्री एजुकेशन पे हम लोग काम करते हैं, तो हम लोगों ने काफी लोगों से कोलैबोरेशन भी कर रखते हैं। हम बच्चों को ये शो करते हैं कि भाई उनके साथ ही है हम, मतलब वो जो स्लम एरिया के या विलेज के बच्चे हैं वो भी स्ट्रीम लाइन में हैं। तो हम उनके साथ डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, क्रिसमस है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आदित्य सर के साथ हम लोगों ने ये स्टेम एजुकेशन प्रमोट करा था अपने स्लम और विलेज एरियाज में। तो हमने क्या, लर्निंग टू डू एंड डूइंग टू लर्न। तो हमने खेल खेल के साथ कैसे विज्ञान को प्रमोट कर सकते हैं, हम लोगों ने ये 2 दिन की वर्कशॉप करी थी और बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आया इसमें। तो आदित्य सर के साथ काफी कोलैबोरेशन रहा है और सर बड़े अच्छे काम करते हैं। तो ये हम हेल्थ कैंप है, समर कैंप है, शू डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे काम हम लोग जो है साथ साथ करते रहते हैं, जो हम विलेज और स्लम एरियाज में जाके करते हैं। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हमारे पास वेरियस डिग्निटरीज हमारे साथ वेबिनार्स में जुड़ते हैं। हमारे साथ कुछ ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ NGOs हैं जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। कुछ चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि डू गुड टू अदर्स एंड इट विल कम बैक टू एन अनएक्सपेक्टेड वे। ये कुछ कोटेशंस है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक ना सो जब तक आपका कोई गोल अचीव ना हो जाए। लाइफ क्या है, लाइफ बुकिश नॉलेज भी नहीं है, लाइफ बुकिश नॉलेज भी नहीं है, ना पैसे से ही आपको लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। अगर हाँ दोनों चीज साथ साथ हो तो उससे अच्छी रियल पिक्चर हम देख सकते हैं। इफ देयर इज नो वे देन क्रिएट इट्स ओन वे। हमें अपना मार्ग स्वयं ही बनाना पड़ता है। तो ये सब चीजें हम लोग नीव के थ्रू करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी इस वाणी को विराम देता हूं और जो हमारे
अदर स्पीकर्स हैं, क्योंकि हमें आज चंद्रयान के बारे में ही सुनना है कि कैसे उसकी फिजिक्स है, उसके पीछे क्या हमारे पास साइंस है, कैसे जैसे एलएमवी, ये 4 मिशन है। एलएमवी का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल है, और मार्क 3, तो ये हमारा 4th मिशन है, जो कि 4th स्टेज वाला, जो कि हम ये चंद्रयान 3 को कर पाए हैं। तो इसके बारे में एडिशनल जानकारी हमारे स्पीकर्स जो गेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और ऑडियंस से भी ये अनुरोध है कि आप इस पूरे को सुने, और कोई भी क्वेश्चन हो या तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, और जिससे कि हम बीच बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो नाउ कृष्णा, ओवर टू यू। कृष्णा, आर यू देयर? Yes, sir. Thank you very much for this welcome. I would also like to welcome, specifically mention two schools, Sudhiti Global Academy Auraiya and Nirmal International School Ujjain, who have collaborated with us, जिनके students भी यहाँ पे participate कर रहे हैं। और जो चेयरमैन है सुधीति ग्लोबल एकेडमी के, डॉक्टर आनंद सर, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस दिया कि हम स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर सके। ड्यू टू हेल्थ इशू वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर आर के द्विवेदी सर भी हैं, जो उज्जैन में निर्मल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। ऑल्सो आदित्य भटनागर सर, जिनका काफी वास्ट एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड नाउ ही इज वर्किंग इन स्टेम एजुकेशन, सो वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर है। तो अभी बेसिकली हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो पूरा थॉट प्रोसेस है इस कि हम स्टूडेंट्स को सिखा सकें। तो आई थॉट कि ये जो सेशन है, हम स्टूडेंट्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है चंद्रयान 3 मिशन को लेके, उससे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग दिस डिस्कशन विद वैष्णव कांत, क्लास 11 स्टूडेंट ऑफ सुधीति ग्लोबल एकेडमी और ये उपदेश सर, इफ पॉसिबल आप जो प्रेजेंटेशन की है वो साथ में शेयर कर दीजिएगा। वैष्णव, कुड यू प्लीज ओपन योर माइक एंड कैमरा। ऑल्सो अदर स्टूडेंट, हाँ जय हिंद, बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज अपना कैमरा और कैमरा ओपन कर लीजिए इफ फिजिबल। सर वॉइस क्लियर है? हाँ वैसे वॉइस आपकी क्लियर है। वैष्णव, अपना कैमरा ऑन करिए। सर कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन नहीं है अभी शायद। सर मैंने ऑन कर रखा है, एक बार मैं फिर से ऑन करता हूँ, एक मिनट। हेलो। यस, यू आर विजिबल नाउ। वैष्णव, गो अहेड। हेलो। बटन वाली है। हेलो सर। गो अहेड प्लीज, गो अहेड। गो अहेड वैष्णव, आप शुरू करिए। सो जय हिंद माई सेल्फ वैष्णव फ्रॉम क्लास 11 सुदिति ग्लोबल एकेडमी और यूपी। आज मैं आप सभी को क्या मिशन, हेलो, चंद्रयान मिशन, हेलो सर, वॉइस आ रही है? सो चंद्रयान 3 मिशन, जो कि पूरा उसका प्रोसेस मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। तो स्लाइड, हेलो सर। वैष्णव, आप जितना डोंट वेट, आप अपना एंड से जो भी प्रोसेस समझा रहे हैं
सर उसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी बीच में कुछ। गो अहेड प्लीज वैष्णव। ओके, यस सर। सो मैं आज आपको पूरी प्रोसेस जो कि चंद्रयान 3 मिशन में हुई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो कुछ बेसिक लॉज के हिसाब से समझाऊंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि मोशन के कुछ बेसिक लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है। दूसरा लॉ ऑफ मोशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो हमेशा फोर्स को प्रोड्यूस करता है। और थर्ड लॉ में हम पढ़ते हैं कि एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। So this is all we read in class 9th approx and स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है तो एफ नेट 0 होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो भी होता है वो 0 के बराबर होता है। फिर जब एफ नेट 0 नहीं होगा तो चेंज इन वेलोसिटी 0 से ग्रेटर हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके साथ साथ तीन और भी लॉ जो होते हैं वो इस प्रोसेस में यूज होते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि किसी भी जो कि सैटेलाइट का मास और उसको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें आसान वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज में आता है। और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज होता है जो कि हमेशा कंजर्व रहती है इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक। और लास्ट जो कि होता है वो केपलर्स लॉ होता है, जिससे हम किसी भी जब कोई भी सैटेलाइट उसमें ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है तो उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, जो कि रिलेशन आगे बताए गए स्लाइड में दिया गया है। उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लॉन्चिंग प्रोसेस से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि जो सैटेलाइट है, जो चंद्रयान 3 है, उसमें तीन टाइप्स के इंजन यूज किए गए हैं। फर्स्ट इज सॉलिड इंजन, जो कि चंद्रयान को वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। कोई भी उसका नेम है S200। फिर हम वो कुछ ही समय तक चलता है जब तक वर्टिकल वेलोसिटी उसको दी जानी चाहिए। जैसे वो उसकी कुछ टाइम ड्यूरेशन थी अप्रोक्स 126 सेकेंड। उसके बाद सेकेंड जो इंजन होता है वो लिक्विड फ्यूल इंजन होता है। उसका जो टाइम लिमिट होती है अप्रोक्स 180 सेकेंड होता है। वो कुछ उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेकेंड लिक्विड फ्यूल इंजन उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद उसका ड्यूरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर जैसे कि अभी हम देख सकते हैं टाइम पीरियड और रेडियस, इसके बीच में रिलेशन होता है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो इससे हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए किस ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी। और इसमें जब प्लेनेट की बात होती है तो हम लोग तो सन को एक फोकाई मानते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट का। लेकिन जब कोई भी सैटेलाइट की बात होती है तो एज कंपेयर टू जब सैटेलाइट लेते हैं तो प्लेनेट का मास जो होता है वो सैटेलाइट से ज्यादा होता है। तो इस वजह से प्लेनेट को एक फोकस मान लेते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट का, और उससे हम उसकी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग जब भी लॉन्च प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेनली यूज होता है। देखिए, लॉ ऑफ मोशन तो इस पूरी प्रोसेस में यूज होते हैं, लेकिन कुछ जगह जहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो एक पॉइंट करके बता रहा हूं मैं। जैसे जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो स्टार्टिंग में यूज होता है जब हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसको अपोजिट थ्रस्ट जो होता है वो गैसेस के थ्रू वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। तो जब नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो वो ऊपर की तरफ उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा। जैसे हम कभी भी चलते हैं तो हम ऑलवेज पैरों से नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तभी आगे की तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तभी आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। कभी भी हम जब तक पीछे की तरफ फोर्स नहीं लगाएंगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम इंजन के बारे में बात कर रहे थे। तो इंजन, इसमें लिक्विड फ्यूल इंजन यूज होता है, जो कि उसकी टाइम लिमिट 180 सेकेंड आई थिंक होती है। उसको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसमें दिया गया है लिक्विड फ्यूल इंजन L11-0। इसको फिर ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट तक जो वेरी इफिशिएंट तीनों इंजन में सबसे अच्छा इंजन क्रायोजेनिक इंजन होता है C25।
जो सबसे अच्छा होता है, और वो लास्ट तक उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, हाईएस्ट वेलोसिटी जो कि 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड है अप्रोक्स। वो उसके स्केप वेलोसिटी के इक्वल होती है जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब स्केप वेलोसिटी क्या होती है? स्केप वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट किसी भी मतलब कोई भी सैटेलाइट एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, दैट इज वो उसकी स्केप वेलोसिटी होती है। अब बात करते हैं हम उसमें पेलोड्स भी यूज हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं सबसे ऊपर पेलोड्स है, उसमें पेलोड्स किसी भी जहाँ पे रॉकेट है उसका क्लाइमेट वगैरह बताने के लिए यूज होते हैं। अब हेलो, यस सर, प्रोसेस यस सर, प्रोसेस। अब प्रोसेस की बात करते हैं कि अर्थ ऑर्बिट जब वो उसको स्केप वेलोसिटी मिल जाती है सैटेलाइट को, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। अब अर्थ के ऑर्बिट में हमें उसके मतलब बार बार ऐसे घूमता रहेगा, फिर तो वो चलता ही रहेगा। जब अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है, मतलब कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा, तो वो उसी हिसाब से रिवॉल्व करता रहेगा। फिर हम उसको एक टाइम पे फोर्स देते हैं, केवल वो एक टाइम पे फोर्स देते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज करके। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? कुछ फ्यूल हम बर्न करते हैं या फिर फ्यूल बर्न करते हैं तो वो वेलोसिटी देता है उसको। फिर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसी से हमारी रेडियस चेंज हो जाती है, जो कि एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से, जिसका फॉर्मूला आई थिंक MVR होता है। फिर उसके ऐसे ही 5 ऑर्बिट्स जो हमारा सैटेलाइट होता है वो कंप्लीट करता है। तो हम हर एक पॉइंट पे जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है हर ऑर्बिट में, तो उसको वेलोसिटी देते हैं। फिर जब वो लास्ट ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसको वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं होती, फिर वो सीधा ट्रांसलूनर ऑर्बिट में पहुंच जाता है। फिर ट्रांसलूनर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद हम उसके धीरे धीरे रेडियस डिक्रीज करते हैं उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए। मतलब मोमेंटम चेंज करते हैं तो उससे रेडियस भी उसकी डिक्रीज होती जाती है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें वो मून के सरफेस से 31 किलोमीटर की 31 किलोमीटर हाई होता है। तो 31 किलोमीटर हाई होता है, फिर उसके बाद हम लोग पावर डिसेंट फेज स्टार्ट करते हैं। तो पावर डिसेंट फेज में एक्चुअली क्या होता है कि उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया होता है। पावर डिसेंट की प्रोसेस को टोटल 4 फेजेस में डिवाइड किया गया होता है। एक रफ ब्रेकिंग फेज, फाइन एल्टीट्यूड होल्ड फेज एंड फाइन ब्रेकिंग फेज एंड आई थिंक वर्टिकल डिसेंट फेज। तो रफ ब्रेकिंग फेज में क्या होता है, उसकी हम धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज करते हैं। तो जैसे 31 किलोमीटर पे उसकी 31 किलोमीटर पे उसकी उसकी डिस्टेंस धीरे धीरे कम करते हैं, और वो कुछ टाइम, इसी वजह से हमने उसको फेजेस में डिवाइड किया है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने उसको फेजेस में क्यों डिवाइड किया? फेजेस में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मतलब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तब वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सॉफ्ट लैंडिंग था। तो मेन सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हम उसको धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगे तो सडन फोर्स क्रिएट होगा, जिससे हमारा जो सैटेलाइट है वो क्रैश भी हो सकता है। तो धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज करने का मेन रीजन ये है। इस वजह से हमने उसको पावर डिसेंट प्रोसेस पूरा बनाया और उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया। फाइन ब्रेकिंग, रफ ब्रेकिंग फेज, फाइन ब्रेकिंग, एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज एंड वर्टिकल डिसेंट फेज। तो रफ ब्रेकिंग फेज में क्या होता है, वो 31 किलोमीटर से 7 पॉइंट आई थिंक 4 किलोमीटर पे आता है कुछ टाइम में। फिर उसके बाद एल्टीट्यूड होल्ड फेज स्टार्ट होता है, जिसमें जो लेजर्स और सेंसर्स उसमें होते हैं, उससे वो पूरी जो आसपास का जहाँ पे उसको लैंडिंग साइट है उसके बारे में वो बताता है। फिर उसके बाद हमारा फाइन ब्रेकिंग फेज स्टार्ट होता है। फाइन ब्रेकिंग फेज में वैष्णव आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हैं वैष्णव। म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं।
Hello. यस सर। सर थोड़ा नेटवर्क इशू था, 1 मिनट। हाँ। तो हाँ, फाइन ब्रेकिंग फेज पे थे, तो फाइन ब्रेकिंग फेज में उसकी वेलोसिटी लगभग लास्ट टाइम तक 0 हो जाती है कुछ टाइम में, जो कि अप्रोक्सीमेटली मुझे नहीं पता है, सॉरी, पर उसके कुछ टाइम में वो वेलोसिटी 0 हो जाती है। और उसको 0 करने का धीरे धीरे यही कारण था कि हमें सडन वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है। अगर सडनली वेलोसिटी चेंज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन स्मॉल टाइम, दैट इज इम्पल्स, वो हाई फोर्स जनरेट करेगा। तो हाई फोर्स जनरेट करेगा तो उसका अपोजिट फोर्स भी हाई होगा और वो हमारा सैटेलाइट क्रैश हो सकता है। तो धीरे धीरे उसको लैंड कराते हैं और ऐसे हमारे सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो पाती है। थैंक यू। Great. Thanks a lot, Vaishnav. I Yes, believe sir. as student representative, you did a good job. Now I believe the experts with us will be able to explain all the things in more concrete detail. So moving ahead with the workshop, I would now request Mr. Ratnesh Mishra, founder of IDYM. He is also project manager of Pratham Satellite of India. Pratham Satellite is first student satellite of India, and student of alumni of IIT Mumbai. So he will be basically introducing Sunny, the founder of Star Lab. So Ratnesh Mishra, are you there? Ratnesh sir? रत्नेश जी अनम्यूट कर लीजिए। Yes, yes, sure. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much, Krishna and Updesh ji. So, जैसा कृष्णा ने बताया कि हम IDYM फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया 2.5 years बिफोर, एंड उसके पहले मैंने खुद एक सैटेलाइट पे काम किया है। सो जैसे मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जैसे बचपन में सपना होता है लोगों का कि आसमान छूना है, या फिर दूसरा सपना होता है कि दुनिया घूमना है। तो एक्चुअली पता नहीं मैंने ये दोनों सपना पूरा किया कि नहीं, लेकिन मैंने जिस सैटेलाइट प्रथम में काम किया उसने सिर्फ आसमान ही नहीं, उसने स्पेस भी छुआ, और वो 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से धरती के चक्कर भी काट रहा, तो उसने पूरी दुनिया भी घूमी। तो बस यही इसी थॉट के साथ हमने ये एनजीओ धीरे धीरे जो एक्सपर्टीज हमें हमारे फाउंडेशन एंड हमारे कॉलेज बाकी चीज़ों से मिली, सो उसको वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एंड ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हम स्पेस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए करते हैं। सो I will not go much into my journey, but definitely would like to share the journey of other people, the other great speakers here. And firstly about him, he's a great friend of mine and really passionate, dedicated, and a space enthusiast. So Mr. Sunny, and he's not just building the rocket, not just building the satellite kit. In short, he's actually building the nation by helping the students there, which I have seen him, and I have seen his lab and the way the way they hosted for all the part. And so I would like to introduce you all with Sunny, and he has already built a rocket club, which then later developed into an aerospace startup. And the best part is he's actually doing the rocket science, which we call. So, but definitely that rocket science he'll be able to explain in the basic terms and the basic ways. He's also building and already built 30 plus low altitude rockets, and his great passionate team
working towards these rockets. Also, just adding on to it, he is already a TEDx Surat speaker, Joe's talk speaker. So welcome you, Sunny, and over to you. A great friend of mine and a great space enthusiast. So over to you, Sunny. Yeah. So much, Ratnesh, for the wonderful introduction, and it's an honor for me to be here actually. And I think whatever Ratnesh mentioned, I think it's just the 1 or 10% of whatever he have done, because he already was spacecraft in space, and we have not touched space yet. But he's a very humble person, one of the most humble person I've ever met in my life, and he's a great source of inspiration for me and my team members. Thank you so much, Ratnesh, for this opportunity. Okay, so I'll start with my session now. I'll just share my screen. And before I begin, okay, Vaishnav, you did an amazing job, because after listening to you, I got an impression now, because you explained most of the things. But I'll give my best. Okay, I just share my screen now. My screen visible to yes or no? Is my screen visible? Yes, it is. Yes, it is. Thank you. So I'm not able to scroll down. Uh, I'm not able to scroll down. Actually, I've got slides like in the MS Paint I've built. I'm not able to scroll, and there are some random scribbles are happening. I hope my screen is visible. Can anyone give me one confirmation once again? Yes, visible, Sunny. Yes, you're visible. Thank you. So I think, as Vaishnav mentioned, I start with the I start with the 3 laws of Newton, and I just skip them very short, because Vaishnav has already explained it in really well. So imagine that there is a ball, and there's nothing like, you're not giving any push to it. So it is gonna stay at the position. So that is what Newton said. That if you have any object, it will remain at that position if you don't give any external force to it. Or if there is any object which is moving, it will keep moving at a constant velocity unless there is any force, external force X on it. Right now, this is the first law. Now, the second law is about the law of conservation of momentum and how force is generated. I'm again keeping this short, because as Vaishnav already explained this. But then you can see we have a balloon. So imagine that we have got balloon here, and I fill it up with the gas. And what happens if I release this balloon? The gases would come out with a very high speed. Okay, I think again. I think someone else is also sharing the same thing. And excuse me, sir, am I audible? Updesher, could you please check if somebody else is also sharing the screen or something? Someone else. Okay. Just a minute. Just a minute. Click. Okay, so I'll continue.
So yeah, so this is how the gases would come out with certain velocity, and the velocity, let's say, it is v0, and the mass of the gas is m0. Then the balloon will actually move. Let's say mass of the balloon is m1, then it will move in the opposite velocity with v1. So I can write an equation based on it that m0 v0 equals to m1 v1. I hope you might have studied this. This is what we call law of conservation of linear momentum, right? So basically, in rockets, this is what we do. We, like in balloon, you can see the gases are coming out with a very high speed. In balloons, in rockets, we generate these gases. So imagine this is rocket, okay? So we put fuel like chemicals inside the rocket, we burn them there, which produces hot gases inside the rocket, and these hot gases are then thrown out with a very high speed, and that causes the rocket to move in the opposite direction. So you can relate. The balloons are a very close, can be a very close analogy to how rockets work, right? I'm repeating again, in balloon, the gases are thrown out with a high speed, and that leads to motion of the balloon in the opposite direction. And similarly, rockets also move in the opposite direction. Now, this is what the third law said, right? So you can see there's a man who, who was on a boat, and he jumped. The boat experienced the force in the opposite direction. So again, if there's a rocket, okay, and let's say there are a lot of particles inside the rocket. Okay, there are a lot of particles. So when particles are coming out, they are exerting force on the rocket body in the opposite direction. So you can see, how first, second, and third law, all three laws are connected, and they work together in order to fly a rocket, right? So here I have a picture of GSLV Mark III, which was used for, this Chandrayaan III mission. India have got multiple rockets. Now here you can see this is the first stage, and this are two solid boosters. Now, like, what is the purpose of using solid boosters? When the rocket is very close to land, okay, so when a rocket is very close to land, it has got no momentum. It is stationary. It is not moving. You need a very high force to lift the rocket up. रॉकेट के अंदर जब लॉन्च पैड पे होता है रॉकेट तो पूरा फ्यूल भरा हुआ होता है एंड बिकॉज it is completely filled up with fuel, it has got its satellite on the top or lander, whatever you call it, then it is having a maximum mass. Launch pad के ऊपर rocket का mass maximum होता है and it has got no velocity. It is at rest of inertia, right? First law. Now what happens? We need a very high thrust. So what we do is we put two boosters or side boosters along with them. They are solid propelled boosters. You can see these side boosters, they are solid propelling. Now, why do we use solid? That should be the question. When ISRO have already built a liquid fuel engine, why solid? Initially, you want a lift. Okay, that means आपको एक velocity चाहिए, बहुत high velocity चाहिए, and it's fine. We don't need to perform corrections. Rocket को बहुत ज़्यादा right direction में build करने की जरूरत नहीं होती initially. तो उनका सॉलिड बूस्टर्स का काम एक ही है कि जो लिफ्ट है वो प्रोड्यूस करके दे दो, आगे जो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, जो पाथ फॉलो करेगा रॉकेट, दैट इट विल डू यूजिंग इट्स लिक्विड इंजन, व्हिच यू कैन सी हियर. Sunny ji, can you adjust your mic so that your voice is very low? My microphone is very close to me and actually I'm speaking very loudly. I don't know. Okay. Now is it better? Sir, maybe it is internet glitch because I am able to hear Sunny's voice clearly. Okay. Okay, yes. Now, so that is why ISRO used this side boosters. Now we have liquid boosters, liquid engines also inside the rocket. Now why liquid engines? Why ISRO used liquid engines? They could have used all solid boosters, right? यहाँ पे भी solid use कर सकता था ISRO, यहाँ पे भी कर सकता था. Problem with the solid is most of the solid boosters, you cannot change the direction of the rocket. So when you fly rocket, okay, you want to put it in a specific orbit. But आप जब उसे launch करते हो, तो कभी-कभी वो अपने trajectory से कोई और direction में जा सकता है. So throughout the trajectory, you need to perform some correction maneuvers. We call them correction maneuvers. Rocket का direction को हमें change करना पड़ता है, and that is possible in liquid. Second is liquid में you can change the value of thrust. अगर आपको आपने दिवाली में रॉकेट्स फ्लाई किए होंगे तो आपने देखा होगा कि दिवाली रॉकेट्स का एक बार बर्न कर दो, आप फिर उसको
ऑफ नहीं कर सकते, वापस ऑन नहीं कर सकते हो। लिक्विड्स में क्या होता है कि जिस पाइप से फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर जा रहा है, लाइक बाइक, आप व्हीकल को ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हो यूजिंग एक्सेलेटर। आप व्हीकल को ऑफ कर सकते हो, आप वापस ऑन कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा स्पीड से जाना है तो आप एक्सेलरेट करोगे तो ज़्यादा फ्यूल पंप होगा, तो ज़्यादा स्पीड मिलेगी। सिमिलरली लिक्विड इंजन में आप ज़्यादा फ्यूल पास करोगे पाइप से तो ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा। जब कम थ्रस्ट चाहिए तो आप फ्यूल को कम कर दो पाइप से, राइट। तो इन सॉलिड्स दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो दैट्स वाई हमें कंट्रोल चाहिए, हमें एकदम प्रिसाइज ऑर्बिट में रखने के लिए रॉकेट को ऊपर जाके हमें कंट्रोल चाहिए, एंड दैट इज वाई वी यूज लिक्विड इंजन हियर। एंड लिक्विड इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू द सॉलिड। कम फ्यूल में ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है लिक्विड। अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो गैस जो होता है उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। दैट मीन्स अगर आप गैस को बर्न करते हो, लिक्विड से अच्छे तरीके से बर्न हो सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड में स्टोर करते हैं, टैंक्स के अंदर लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है, बट जब वो उसको बर्न करते हैं तब उसको गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर दोनों को, राइट। तो मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, राइट, बट देन इतना समझा देता हूँ कि टैंक्स में क्यों हम लिक्विड में स्टोर करते हैं। गैस को स्टोर करना हो, अगर आपके पास 10 लीटर का लिक्विड एंड 10 लीटर का गैस है, ठीक है, तो गैस लिक्विड को आप छोटे कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हो। गैसियस पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? हर एक पार्टिकल के आजू बाजू बहुत ज़्यादा एयर होती है, तो उसको स्टोर करने के लिए टैंक काफ़ी बड़ी चाहिए, और टैंक की साइज बढ़ेगी तो रॉकेट का मास बढ़ जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई हम स्टोर करते हैं लिक्विड फॉर्म में। नाउ जैसे वैष्णव ने समझाया कि पहले हम क्या करते हैं, स्पेसक्राफ्ट को एक अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में रखते हैं। तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। तो ये अर्थ है, राइट। हम पहले जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं अर्थ से, तो हमने एक ऑर्बिट में से रख दिया, राइट। नाउ इट इज मूविंग, तो ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा। दिस इज अगेन लॉ ऑफ इनर्शिया। यू आर डूइंग नथिंग, आप कोई रॉकेट का थ्रस्ट फायर नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, इट इज मूविंग इन दिस ऑर्बिट। पर मून यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट, हमारे पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है कि हम डायरेक्ट मून पर जा सके, हमें कोई वेलोसिटी चाहिए जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। व्हाट वी डू इज वी फायर थ्रस्टर्स, ओके। तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देयर आर टू किड्स हु आर प्लेइंग गेम, ओके। तो पहला किड क्या करता है कि इस बॉल को कोई वेलोसिटी से फेंकता है, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकंड। तो कोई सर्टेन हाइट पे जाएगा। आप इसको बॉल की ऑर्बिट मान सकते हो, ऐसे पूरा एक ऑर्बिट इमेजिन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि वो कोई डिस्टेंस तक गया। बट अगर नेक्स्ट टाइम व्हेन ही इज थ्रोइंग अ बॉल, वो 15 मीटर पर सेकंड से फेंकेगा। आप इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन। तो अब बॉल ज़्यादा हाइट अचीव करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अगर हमें मून तक जाना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो ये देख सकते हो, ये अर्थ है, राइट। हम पहले क्या करेंगे कि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के आजू बाजू की ऑर्बिट पे रखेंगे, ठीक है, जिसको हम एक पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट बोला जाता है। अब जब वो इस पॉइंट पे आता है, हमें पता है कि मून यहाँ पे होगा, तो इस डायरेक्शन में हम थ्रस्ट फायर करते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं। तो इमेजिन करो जैसे वो बॉल ऊपर की तरफ गया, ज्यादा हाइट पर गया, वैसे स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, ज्यादा हाइट पे जाएगा। एंड अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो स्पेस वो वापस नीचे आएगा। बॉल कैसे नीचे आ गया था वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे घूमता रहेगा। पर जब स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम वापस इस डायरेक्शन में थ्रस्ट देते हैं। तो अब क्या करेगा, देखो पहले अंदर की ऑर्बिट में था, हमने थ्रस्ट फायर किया जिससे वो बाहर की ऑर्बिट में आ गया, एंड वापस थ्रस्ट देने पे वो मून की ऑर्बिट में लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे घूमता रहेगा, राइट। तो ये एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है जो फॉलो होगी। यहाँ से जाएंगे इस डायरेक्शन में, एंड देन वो आउटर ऑर्बिट में आ गया। सो दिस इज हाउ कोई भी रॉकेट हमारे पास है नहीं जो डायरेक्ट बाहर के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को भेज सके। तो हम एक पॉइंट पे एक वेलोसिटी देते हैं, थ्रस्ट फायर करते हैं ताकि रॉकेट उधर जा पाए। तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा, आई डोंट नो कि सॉफ्टवेयर दिख रहा है कि नहीं आपको, बट ये सॉफ्टवेयर है जिसको स्पेस मिशन पे हम यूज करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अर्थ है, और ये अर्थ के आजू बाजू का पहला पार्किंग ऑर्बिट है, ठीक है। एंड अब देख, मैं एनिमेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर वो सैटेलाइट यहाँ पे ऊपर जाएगी। आप देख सकते हो 2 थ्रस्टर्स रखे हैं मैंने यहाँ पे,
अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो यहाँ पे लिखा है इम्पल्सिव बर्न 1 एंड इम्पल्सिव बर्न 2, ये थ्रस्टर्स का नाम रखा है, राइट। तो देखो एनिमेशन करेंगे, पहला इनर ऑर्बिट आया, ठीक है, अंदर की ऑर्बिट पे आया, फिर यहाँ पे एक बर्न होता है, ऊपर सेकंड थ्रस्टर बर्न करते हैं, दो थ्रस्टर्स इसीलिए रखे गए क्योंकि पहला बर्न यहाँ पे होता है, दूसरा बर्न ऊपर की तरफ होगा, राइट। तो इस तरह से ही हमें चंद्रयान में भी यही मेथड यूज किया कि हम मून तक पहुंच सके इवन लो थ्रस्ट। अब मून तक पहुंच गए, अब जो मेन चैलेंज था, तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसके अंदर हमने केपलर्स के लॉ यूज किए थे। तो अगर आपको केपलर्स के लॉ पता है तो पहला जो लॉ है वो बहुत सिंपल है। इसके अंदर केपलर ने बोला है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट को आप रखते हो ऑर्बिट में, वो हमेशा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रहता है, राइट। तो वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अब केपलर ने दूसरा लॉ दिया था, ये थोड़ा ध्यान से समझना बिकॉज इसमें थोड़ा बेसिक इक्वेशन है जो मैं आपको बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ में उन्होंने बोला कि अगर एक स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे है टाइम t1 पे, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ सेंटर तक, कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है एक्चुअली स्क्रीन एक्सिस का, सर इफ यू कैन। कृष्णा जी इफ यू आर हियर, कोई कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट। Sorry. Someone is sending request for screen share. Just wait a minute. Okay. So at time t1 the spacecraft is here. फिर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट, एट टाइम t2। तो हम इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1, कोई भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन वाला, जैसे 10 मिनट, एक रैंडम नंबर में ले रहा हूँ 10 मिनट का। अब स्पेसक्राफ्ट घूम के यहाँ पे आ गया टाइम t3 एंड एट टाइम t4 इट इज हियर। हम ये दोनों भी ऐसे लेते हैं पॉइंट्स को, यहाँ पे एक और ट्राइंगल बनता है such that time t4 minus t3 is also equals to 10 minutes, same time. According to Kepler, ये अगर टाइम डिफरेंस सेम है तो जो ये एरिया स्वेप्ट हो रहा है वो भी सेम होना चाहिए। तो उससे क्या प्रूव होता है कि ये डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो भी 10 मिनट में हो रहा है, और ये डिस्टेंस काफी लंबा है कंपेयर टू ये डिस्टेंस, x इज ग्रेटर देन y। तो दोनों को 10 मिनट ही लग रहा है सेम टाइम, ठीक। तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। इसको यहाँ पे मैं वेलोसिटी की तरीके से vx इज ग्रेटर देन vy। इसका मीनिंग है कि जब स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट के नजदीक से गुजरता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है यहाँ पे, और यहाँ से जब दूर से जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। आप ये वाले एक्सपेरिमेंट में भी इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे ये बच्चा जो बॉल से खेल रहा है, जब ये उसको एक डायरेक्शन में फेंकेंगे तो जब मैक्सिमम हाइट पे आएगा दूर, तब क्या होगा, वेलोसिटी मिनिमम होगी, 0, इसीलिए बॉल वापस नीचे गिरने लगता है। सिमिलरली इस केस में भी यही होगा, जब स्पेसक्राफ्ट यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी। टेक्निकल नाम इस पॉइंट का है एपोजी, एंड इस पॉइंट को हम पेरिजी बोलते हैं। तो इसको भी यूज किया गया था चंद्रयान 3 में। ये टेक्निकल है बट आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट को जानने के लिए कि क्या होता है। अब इसके अंदर भी न्यूटन का बेसिक लॉ यूज किया गया कि इस वेलोसिटी कम कैसे होती है जब दूर जाता है स्पेसक्राफ्ट। मान लो ये स्पेसक्राफ्ट है तो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ग्रेविटी उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी कम होती है। एक बॉल जब ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, तो बॉल की स्पीड कम होती जाती है। बट जब एक बॉल नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो बॉल की स्पीड बढ़ती है नीचे आते वक्त। सिमिलरली स्पेसक्राफ्ट जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ग्रेविटी उसे सेम डायरेक्शन में पुल कर रहा है, स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। तो इसका यूज किया गया था। तो ये केपलर के दो लॉ है। थर्ड लॉ ऑलरेडी वैष्णव ने बताया, विच इज टाइम पीरियड जो है वो ऑर्बिट के साइज के ऊपर डिपेंड करती है, डिटेल में अभी नहीं। तो ये था अबाउट ऑर्बिट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसरो ने यूज किया जो हमारे पढ़ाई में आता है। तो हम ये बोलते हैं ना कि पढ़ाई, लाइक यू माइट हैव हर्ड कि लॉट ऑफ पीपल दे से कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और जो रियल लाइफ में होता है वो बहुत अलग होता है। अलग नहीं होता है, जो स्कूल में पढ़ते हैं वही हम स्पेस मिशन में भी यूज करते हैं। जो बेसिक केपलर के, इनफैक्ट नासा का एक वीडियो भी है कि कैसे नासा ने 8th और 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स करके एक रोवर लैंड करवाया मार्स के ऊपर। तो इसरो ने, नासा ने और कोई भी एजेंसी ले लो वर्ल्ड में,
जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी इक्वेशंस होते हैं, वो 11th-12th का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में हम जो पढ़ते हैं वही यूज किया जाता है। अब लैंडर की बात करते हैं तो लैंडर के अंदर 4 थ्रस्टर्स थे। मैं अभी एक ही थ्रस्टर्स का के बारे में समझाऊंगा कि इसको कैसे न्यूटन के डायनामिक्स को यूज किया गया। इसको बोलते हैं स्पेसक्राफ्ट डायनामिक्स। तो जब ये उनके तरफ पहुंचा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ, दैट इज वेट। तो वेट होता है, इट इज अ फोर्स। वेट इज नॉट एक्चुअली मास। ओके, m into g, मास into एक्सेलरेशन ऑफ मून। मास into एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स, राइट। अब जब नीचे की तरफ वो गिर रहा है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी। आई थिंक फाइन ब्रेकिंग, रफ ब्रेकिंग वैष्णव ने ऑलरेडी बताया, बट मैं आपको ये प्रोसीजर बता रहा हूँ कि न्यूटन के इक्वेशंस को कैसे यूज किया गया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि उसकी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, जब लैंड कर रहा है हमें उसको स्लो करना है, तो हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें कोई फोर्स देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थ्रस्ट फायर करते हैं, हम गैसेस को बाहर के डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट को ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और मून के ऊपर कोई एयर है नहीं तो ड्रैग तो लगेगा नहीं। अब क्या होगा, ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो कैसे डिफाइन होगा? तो नेट फोर्स जो लगता है स्पेसक्राफ्ट पे वो क्या होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है माइनस ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mc माइनस एफ। अब फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं लिख सकता हूँ इसको, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? mg माइनस एफ डिवाइडेड बाई m। ये इक्वेशन हम स्कूल में पढ़ते हैं, राइट। तो अगेन आप देख सकते हो कैसे मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करके हम एक लैंडर को एक्चुअली मून पे लैंड करवा सकते हैं। क्योंकि मून पे एयर है नहीं तो वहाँ पे जो ड्रैग है, अगेन कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है कंटिन्यूसली, तो वो फैक्टर, ड्रैग का फैक्टर नहीं आएगा। जो है वो आपका मेन है, इंजन से जो थ्रस्ट आ रहा है और mg है। अब ये एक्सेलरेशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, राइट। तो अब आप जिस वेलोसिटी से लैंड करवाना चाहते हो उस बेसिस पे एक्सेलरेशन आपको चाहिए रहेगा, उसके हिसाब से यू विल डिसाइड द थ्रस्ट ऑफ द इंजन, राइट। तो इसी तरीके से ये चंद्रयान 3 के जो इंजन का थ्रस्ट था उसका वैल्यू डिटरमाइन किया गया था। तो ये था अबाउट दी लैंडिंग। अब एक फाइनल कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। टर्न ऑन माय कैमरा। तो अब हम जो बेसिक सीखेंगे वो है कि रॉकेट स्टेबिलिटी। आपने लैंडिंग का देख लिया, जो लैंडर है वो भी रॉकेट की तरह ही काम करता है, दे हैव एन इंजन, राइट। एंड जो रॉकेट में लॉन्च किया गया था दैट इज GSLV। तो इन रॉकेट के अंदर एक स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो रॉकेट्स को स्टेबल कैसे बनाया जाता है? तो उसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं फॉर नाउ। दोनों पॉइंट्स अलग होते हैं, ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस है, बट छोटे स्केल के ऑब्जेक्ट के लिए हम कंसिडर करते हैं सेम। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे देयर इज अ बॉडी ट्यूब, ट्यूब देख सकते हो। ये ट्यूब को मैं एक पॉइंट पे बैलेंस कर सकता हूँ। ये पॉइंट उसका हो जाता है सेंटर ऑफ मास। अब मैं क्या करूंगा, एक एंड पे मास ऐड कर दूंगा थोड़ा सा। आप देख सकते हो वो अभी बैलेंस नहीं रहा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो चुका है उस डायरेक्शन में जहाँ पे मैंने मास ऐड किया, राइट। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि रॉकेट का भी सेंटर ऑफ मास होगा। कहाँ पे होगा वो हमें नहीं पता है, बट सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होगा जहाँ पे रॉकेट बैलेंस रहेगा। दूसरा एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हो। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है कि जहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। या तो जहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है वहां पे एयर की वजह से जो ड्रैग जनरेशन होगा वो ज्यादा होगा। ये बहुत लाइक क्लियर है हमें। ये तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया ज्यादा है। इमेजिन करो आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, किसी के पीछे बैठे हो और आपने कार्डबोर्ड का बोर्ड पकड़ा है बहुत बड़ा। क्या होगा, आपको एक पीछे की तरफ ड्रैग लगेगा क्योंकि एरिया ज्यादा है कार्डबोर्ड का, राइट। नाउ दूसरा पॉइंट जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो भी ट्यूब के ऊपर होगा। अब कहाँ पे होना चाहिए ये समझते हैं। अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करता हूँ तो पॉइंट पे ही वो घूम के आगे जाएगा, राइट। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, घर पे मत करना, बाहर आप कर सकते हो कि कोई ट्यूब लो, राइट। उसके एक एंड पे ज्यादा मास लगाओ और उसको आप ऐसे ही फेंक दो। वो क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर रोटेट करके आगे जाएगा, राइट।
तो अगर वो पॉइंट नीचे है रॉकेट में, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपका सेंटर ऑफ मास नीचे के डायरेक्शन में, राइट, तो रॉकेट इस पॉइंट पे मूव हो सकता है। आप देख सकते हो कि मुझे बैलेंस करना टफ हो रहा है नीचे, रॉकेट बहुत ज्यादा टफ है, राइट। एंड सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे, ऊपर है। अगर सेंटर ऑफ मास नीचे है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर की तरफ होगा, तो क्या होगा, ऑलरेडी बैलेंस करना टफ है। जब हवा से लॉन्च हुआ उस दिन ज्यादा विंड होगी, तो क्या होगा, जो ड्रैग होगा ऊपर ज्यादा होगा, तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब ये अपने आप ऊपर की डायरेक्शन में नहीं आ सकता रॉकेट। तो हम क्या करते हैं, रॉकेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को ऊपर रखते हैं। देखते क्या होता है। तो ये सेंटर ऑफ मास ऊपर है, वो पिवट पॉइंट हो गया रॉकेट। एंड सेंटर ऑफ प्रेशर को नीचे रखते हैं, दैट इज कि नीचे की तरफ ज्यादा विंड एक्ट करेगा और ज्यादा एयर एक्ट करेगा और ज्यादा ड्रैग यहाँ पे क्रिएट करेगा। देखो अब क्या होता है, जब एयर नीचे की तरफ ज्यादा लगता है, रॉकेट अपनी पोजीशन पे अपने आप आ जाता है। ये चंद्रयान 3 ले लो या कोई भी मिशन ले लो, सारे मिशन में सेंटर ऑफ मास ऊपर रखा जाता है। तो ऊपर कैसे रखते हैं हम, ऊपर वजन रख के, जिस डायरेक्शन में ज्यादा मास होगा वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये सारे स्पेसक्राफ्ट में जितने भी सैटेलाइट्स है और जितने भी हैवी पेलोड्स है उनको ऊपर रखा जाता है। और सेंटर ऑफ प्रेशर को नीचे कैसे शिफ्ट करेंगे, नीचे एरिया बढ़ाते हैं। एरिया कैसे बढ़ाते हैं, पिन्स लगा के। आपने देखा होगा कुछ रॉकेट्स में पिन्स लगे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे नीचे पिन्स लगाएंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे। फाइन, so that's all about rockets and the Chandrayaan mission from my side. I hope you guys enjoyed. Uh, Sir, I think I'm done. I'm open for the questions from students. If you have any questions, you can take questions right now or later on. We'll take the question later. Okay. Hello, Krishna. Hello. Sunny, you have completed or still left something? No, I've completed. Okay. I think there is a problem with Krishna. So I now would like to invite Aditya Bhatnagar ji. Aditya Bhatnagar sir, please come and please enlighten us with the STEM things. Aditya sir. Good evening, everyone. Is my voice clear? Yes, sir. Yes. Great. Thank you so much. It was really enlightening to listen to both of you. Really fantastic presentations and a lot of eye openers and in fact points for questions which are there. So I interact also a lot with students, and I thought that today I will be a student and I will try to raise some questions which might come in the minds of students, or they might realize it later on. So the first question that I had in mind was, and I hope we can make it interactive. Is it okay if we make it interactive? Hello? Sure. Okay, great. So my first question was that, when something is orbiting any other body or whatever, let's say even the moon going around the earth, or the Chandrayaan, going around its various orbits around the earth. We say that Newton says, that the velocity should be the same, and in that case, it should continue to move in a straight line. But instead of that, it seems to come back towards the earth and then again go away from the earth and then come back to the earth and again go away to the earth. So what is happening here? What is causing this
orbital movement of anything around the Earth or around anybody for that matter. So that was my first query which was there. And the second thing was that, we talked about center of mass, a very enlightening, really fantastic explanation and demonstration. But what happens, because as the rocket is going, fuel is getting consumed. And so the mass of the rocket keeps on changing as it, goes up. So the center of mass would keep coming, would keep changing. So what happens with the change of the center of mass of the rocket? So perhaps if Mr. Sunny sir can. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Aditya sir, am I audible? Yeah, absolutely. I'm really sorry for the interruption. Something happened with my device, so I'm joining from other device. Okay, great, no problem. So I'm grateful for the questions that you asked. We have other speaker who is basically assistant professor from Department of Physics, Yes, so Hindu College. exactly. We should hear him. Yes, exactly. So the question that you asked, basically, I'll forward them to my professor, Dr. Amit Tanwar. I had the privilege of being his student from 2015 to 2018. One of the most loved professor of our time in our time. So I would request Dr. Amit Tanwar to give away his presentation, and also, if possible, try to answer the things that Mr. Aditya Bhatnagar sir asked in his basic queries, if possible. Yeah, Krishna, actually, Thank you so much. I hope I'm audible. Hello? Hello. Yes. Thank you, sir. So Vaishnav, as a student, have given a wonderful presentation. As a student, what he think and how the physics that he is learning, वो कैसे applicable हो रहा है, that was really wonderful. Sunny ने उसमें और बहुत technical चीजें और डाल दी और बहुत beautifully explain किया that what science we are learning, what physics we are learning in 11th and 12th standard is so important. That is not an ordinary science. Now इन दोनों ने मिलके चंद्रयान को अर्थ से मून तक पहुंचा दिया, सॉफ्ट लैंडिंग भी होगी, बट आगे जाने से पहले सिर्फ सवाल इतना ही नहीं है. आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सिर्फ हमें यही करना है? डू वी वांट टू गो टू द मून, दैट्स इट? क्या उसको टच करना है और काम खत्म? आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू स्टूडेंट के माउंटेन एवरेस्ट तो वहां पर है और काफी लोग जा चुके हैं, बट स्टिल many people again want to go to that summit. वहां पे जाना चाहते हैं. क्यों जाना चाहते हैं? Because we are curious to know. Now Chandrayaan 3 को वहां पर भेजना, definitely that is an important task, but उसके अलावा the main important thing was it is a scientific exploration. We have to understand the science over there, and my talk is focusing on that part. चंद्रयान को से वहां भेजना is not the only part, that is the end of the beginning part. साइंस तो अब शुरू हुआ है वहां पर, जब चंद्रयान ने बहुत सारा डेटा, रोवर ने, लैंडर ने जब बहुत सारा डेटा लिया है. So I would be focusing mainly on the payloads, and I'm sharing my screen. I hope my screen is visible. Okay, so मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, बट मुझे लगता है कि वैष्णव ने काफी डिटेल दे दिया और सानी ने तो बहुत टेक्निकल तरीके से चीजों को बता दिया, तो मैं बिल्कुल थोड़ा स्पीड अप में ही रखूंगा. The projectile motion that you learn, you know the equation, it comes from the equation of kinematics. Then by working some mathematics, putting some equation over here and over there, you will land up with these equations. You can find out the range, time of flight. Then we have the half projectile. Then we have the half projectile motion. You simply put some velocity in the x direction, and under the gravity, it comes down. And this is what is actually happening in the landing. So since it is already explained, I'm not putting too much effort over here. Different phases, वैष्णव ने भी बता दिए हैं और सनी ने भी अच्छे से explain कर दिया है.
Now there is one question that came up, why we have these kind of elliptical orbit. Okay, and again when it moved to toward the moon, again we have some elliptical orbit, and then it is moving into a circular orbit. Okay, so a basic mathematics, you know, total energy, kinetic energy plus potential energy, and we get the value of the energy. The energy plays a very crucial role in defining the orbit, whether that orbit is a circular orbit or whether that orbit is an elliptical orbit, and so on. In the last diagram, you can see earlier we have some elliptical orbit, and then the ellipticity of the orbit keeps on increasing. So how is that happening, and why we have to do this? मतलब ये करने की जरूरत क्यों है? हम डायरेक्टली क्यों नहीं जा सकते? Sunny sir has already answered this question, but still चंद्रयान में हमने इतने सारे elliptical orbit, बड़े-बड़े elliptical orbit पे गए हैं, and finally हमने फिर मून की तरफ अपना रुख किया है. तो ये सब करने की जरूरत क्या है? Okay, so energy plays a very crucial role. Now there is some mathematics. If you work out the mathematics, that is definitely not in the school syllabus. वो कुछ college level पर आते हैं, and we have this effective potential curve. Now this effective potential curve actually gives some answer. So I'm just giving some idea, not explaining this in too much detail. You can see there is this dark curve. There is a dip. At this dip, we have some energy. This energy value is negative. If you remember in the last one, this is what you're going to learn in 11th class. This energy comes out to be negative. Now, if this energy is negative and that at the minimum of this curve, then the orbit is a circular orbit. If you increase this energy a little bit, but again remains negative, you just increase this a little bit, but again remain negative only, then this orbit is elliptical. It's an ellipse. If energy becomes zero, it is parabolic. They're positive, it is hyperbolic. We are not bothering about this parabolic and hyperbolic orbit because we're only bothered about the elliptical orbit. You can see in this diagram, we have the elliptical orbit. Okay. So what is happening in the Chandrayaan, that when it is parked in the parking orbit, it goes into the circular orbit. At this particular point, we are providing some energy. We're putting some energy into this Chandrayaan satellite, Chandrayaan spaceship. Now that energy is only given at this particular point. Some kind of an injection is there. That energy increases the value of the energy. And when an energy value is increased, when you just increase the value of the energy, the orbit becomes elliptical. And that's why we have the elliptical orbit. And we don't have to dissipate any kind of energy while this is in the elliptical orbit. When again it reaches at this point, you again put some more energy. Again, the ellipticity increases more and it goes into the higher elliptical orbit. So you're just injecting into the energy over here at this point, at the perigee, and then the gravity plays its role, the gravitational energy plays its role, and it moves into the higher elliptical orbit. And finally, when it reaches into the higher last elliptical orbit, then again you give enough energy such that now it cannot have an elliptical orbit. Now it moves toward the moon. Okay, so this is what is happening. This is what we are just providing the energy. So we are only giving a small injection of energy and it moves in the elliptical orbit. And we use the gravitational energy. We use the gravity to play its role. I hope you also remember about the Luna 25, the Russian mission, which happened in between July 14 and August 23. And what they did, they just wanted to go there in one go. So they have dissipated a lot of energy. They're trying to go over there, and we know what happened with the Luna 25. Okay, but Indians have very smartly used the gravity to place the Chandrayaan orbit in the moon orbit. Okay. Anyways, my focus was not on this part. My focus is actually on the payload. मैं payload पे ज़्यादा focus करना चाह रहा हूँ क्योंकि everyone talks about कि हमें moon पे जाना है, हम लोग moon पे चले गए हैं. But the main important point is कि moon पे पहुंचने के बाद क्या वहीं पर mission खत्म हो जाता है? No.
it is actually the end of the starting point. Beginning तो अब शुरू हुआ है, science तो अब शुरू हुई है. And what is that science? That science, to perform that science, I have different kind of sensors. Like for example, if अगर मुझे आपका temperature measure करना है, अगर किसी को fever है, तो temperature measure करना है, तो how can I measure the temperature? The simple answer would be, sir, you can use a thermometer. If you use a thermometer, definitely you can measure the temperature. So similarly, we are using certain sensors, we are using certain devices to measure certain things on moon. What are those? These are the sensors which are placed in Chandrayaan. The first one is Ramber LP, Chastity, ILSA, EPSEX, LIBS, and SHAPE. And these devices, these sensors have actually sent some result on planet Earth, which is of great importance for human. Let's check out what are the results we have got. The very first thing that we have got is about this Chastity 1. It is the Chandra surface thermophysical experiment. What it does, it actually measures the temperature profile. So it is having some kind of a thermometer, and that thermometer, not exactly the thermometer, but kind of a temperature sensor. But you can think, एक 11th standard में आप इसे बिल्कुल thermometer समझ सकते हो. वो thermometer can go up till a depth of 10 centimeter. So it has measured the temperature till 10 centimeter depth. जो moon पर sand है, उसके अंदर जो dust वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर 10 centimeter तक it can go, and it gives a wonderful result. If you check out the temperature above the surface, 0 centimeter, that is just on the surface. Above the surface, the temperature is almost 55 degrees centigrade. Delhi में temperature या फिर northern India में temperature is approximately around 30 or 35 degrees centigrade. So it's quite hot. And as the temperature sensors move downward, you can see the temperature is reducing. And at around 8 centimeter depth, the temperature is minus 10 degrees centigrade. हमारे freezer में कितना temperature होता है? Try to think कितना temperature होता है? यहाँ पर ये temperature कितना आ रहा है? It is minus 10. Okay, so we are getting the temperature profile. Temperature plays a very crucial role atmosphere में. जो अगर atoms होंगे, उनका कितना velocity होगा, इसमें helpful रहता है हमारे लिए. So temperature plays a very crucial role. So that's the first science information we got. The second science information, LIBS, LIBS and APXS. Now this is laser induced breakdown spectroscopy, and APXS is alpha particle X-ray spectroscopy. Now laser induced spectroscopy में क्या है that we have taken some rock, उस rock के ऊपर we have put the laser light. When you put some laser light, some kind of a small plasma is generated, and we try to understand what that plasma is. And whatever elements are there, you must aware of the periodic table. आपने periodic table पढ़ा होगा 11th में chemistry में. There are so many elements are there: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, and so on. So every element can show their presence. अगर वो plasma को मैं study करूं, अगर वो element वहां पर है, वो element का presence उस plasma में होगा, अगर वो particular element होगा. And this is what is shown in this graph. This gives us an idea कि वहां की rocks में, वहां की sand में क्या-क्या element present है. And obviously हमें answer आ भी गया, हमारे पास sulfur आ गया, हमारे पास iron आ गया, chromium आ गया, titanium आ गया. In the form of oxides they are present. Okay, the same thing is with the with this APXS. It is alpha particle X-ray spectrometer. We know about the alpha particle radioactive decay में alpha particle generate होता है, alpha, beta and gamma particle generate होता है. आपने radioactivity अगर पढ़ा होगा तो you must be aware of that. So उस alpha particle की study से we're going to figure out what elements are present. Okay, so these two things are giving almost a similar result. 11th class में या 12th class में मैं ये समझ सकता हूँ, but I know कि इनके results जो हैं वो काफी different है. इनका method बिल्कुल अलग है data acquisition का. Okay, so a wonderful science we have got कि moon के
रॉक्स में, मून की सैंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे एंड क्या कोई नया एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है, हम ये भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो डेटा भी आया है हम उसको भी और एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डेटा है वो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता है उसका एनालिसिस। वी नीड लॉट ऑफ टाइम, lot of understanding, and every astronomer people, every scientist are discussing with the other scientists and trying to figure out the correct physics. Okay, then this last one, that is ILSA, instrument for lunar seismic activity. This is actually used to measure any kind of seismic activity. जैसे planet Earth पे earthquakes आते हैं, अभी मोरक्को में बहुत भयंकर earthquake आया है, 2000 people have lost their lives on 9th of September, this Saturday. So क्या मून पर भी ऐसे मून क्वेक्स आते हैं क्या? अगर ह्यूमंस ने अपना कॉलोनी वहां पर बनाया तो क्या हमें मून क्वेक से डरने की जरूरत है? So to understand that idea, we have to measure the seismic activity. और दूसरा, seismic activity से हमें मून के अंदर का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा। लाइक प्लैनेट अर्थ में अंदर हमें, we know we have the molten magma kind of a thing, क्रस्ट है, उसके अंदर मैंटल है, सो इनसाइड स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो सिस्मिक एक्टिविटी से वी कैन गेट द इनसाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मून। ओके, एंड वी गॉट सम रिजल्ट, हमें एक रिजल्ट भी मिला 26 अगस्त को मून पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आया। सडनली देयर इज सम शार्प पीक्स, यू कैन सी ये रेड कलर का शार्प पीक्स आए हैं। सो वी हैव मेजर्ड समथिंग एंड स्टिल दिस इज करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं है कि हमने बस स्टडी कर लिया, अब इसको हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ओके, सो द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू टेल कि चंद्रयान को वहां पे पहुंचाना इज नॉट द ओनली थिंग, बल्कि चंद्रयान को वहां पे पहुंचना इज द वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि अब उसका हमें एनालिसिस करना है, वहां पे साइंस करनी है, वहां पे जानना है कि वहां पे जो हो रहा है वो वहां पे क्या चीज प्रेजेंट है, और उसकी साइंस के बारे में हमें स्टडी करना है। With that note, I stop sharing. I hope you liked it, and if you have any question related to payloads and sensor, definitely you can ask your question. Thank you. Hello. Krishna, it's over to you. Thank you very much, sir, for this wonderful presentation. डेफिनेटली जो चीज़ें आपने बताई हैं वो काफ़ी इंट्रीगिंग है, स्पेशली जो आपने अर्थक्वेक वाला पार्ट बोला, क्योंकि वो फिजिकली मैं इमेजिन इजीली कर पा रहा था। जैसे आपने बताया मोरक्को में अभी 2000 लोगों की डेथ हुई, तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिजिकली इमेजिन कर पाई। तो काफ़ी साइंटिफिक जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस जो आपने रिवील किया वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग है, और डेफिनेटली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर होकर ज़रूर ये समझेगी कि जो लर्निंग है उनकी उनका कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं को ये जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं, अगर आप लोगों के पास थोड़ा समय हो, हम लोग क्यूए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्यूए सेशन हम सबसे पहले हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनके साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं उनको विद ए वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वी हैव इनवाइटेड देम। तो सबसे पहले मैं मिस्टर आदित्य भटनागर सर, जो स्टेम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, आई हैव सीन हिम वर्किंग विद स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास 6th क्लास। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस somebody ऑफ हिज स्टेटस जब वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं विद अ पर्पस कि वो उन्हें बिल्ड कर सके, तो मुझे लगता है उनके दिमाग के जो थॉट्स होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे पूरे सेशन के लिए। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर आदित्य भटनागर सर। आपने जो सर पहले सवाल पूछे थे, कुड यू प्लीज जस्ट रिपीट once again, sir? Over to you, sir. Sure. Thank you. Can you hear me? Yes, All- sir. Great. Thank you so much, Professor. It was really fantastic. We've hit everything about the payload because that's the whole reason why we sent the thing. वो भूल जाते हैं कि भेजा क्यों था और हम उसमें जुट गए कि कैसे भेजा था। तो but that of course is also very important, कैसे भेजा, because जब रिपीट करना होगा तो how will we do it? तो इसमें मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इट इज़ स्टूडेंट्स many times feel that हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये हो गया।
एक लिटमस का पेपर डाला and that is all over, it's all done. That's how simple science is. But what you have shown is really showing that, and that is true of any space data or any data which comes to us, that it is not easy to analyze and find out what can be the, what is causing this. So for example, the LIPS probe, I think you were saying, was finding titanium out there, which is a very important metal for us on Earth here. It's very rare and we need a lot of it. So अगर you know तो उसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोप है वो जो दिखा रहा है हमें, द स्पेक्ट्रल पैटर्न दिखा रहा है, वो स्पेक्ट्रल पैटर्न से फिर हम ये कैसे पता चलाएं कि उसके हाउ मच ऑफ इट इज देयर. तो दैट्स प्रॉब्ली होल लॉन्ग प्रोसेस, और डेटा को एनालाइज करना, वो करना. तो स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि कोई भी साइंटिफिक चीज में देयर इज समथिंग कॉल्ड परसिस्टेंस, और जिसको हम हिंदी में लगन बोलते हैं. तो बिना लगन के ये काम नहीं हो सकता है. सो दिस इज वेयर आई थिंक द होल चंद्रयान मिशन शोज कि कितनी लगन लगती है इसमें, right from sending the rocket there, landing it, and now getting the scientific data and trying to see the what is happening. So like you said, the ILSA was giving us probably a quick which is there, and somebody has written that moon does not have tectonic plates. ऐसा हम मानते हैं कि नहीं होगा, जैसे पहले हम मानते थे कि चांद के ऊपर पानी नहीं हो सकता, but it was found that there was glass beads which had embedded in it water in both in H2O form. So I think Chandrayaan 1 was probably the first spacecraft to find it. So ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं. So first lesson that we should all of us imbibe, teachers and students, that it's a journey and there's a lot of things to be learned from here. So in terms of questions, the first questions I asked were actually about the propulsion, and the most interesting thing that Mr. Sunny showed about the center of mass. And one thing that might arise in the minds of students is कि fuel is getting consumed, तो उसका mass तो कम हो रहा है. So since the mass is reducing, in a balloon you won't see that, because balloon में जो mass reduce हो रहा है, that may be very small compared to the rest of it. But यहाँ पे a significant amount of mass is being reduced as the fuel burns away. So the center of mass would keep traveling, maybe upwards or whatever. तो इसमें अगर कुछ थोड़ा सा kind of illustrate, I think to students it'll be a very nice dynamic thing के जो है वो तो है, that we are using Newton's laws, and all of it is actually based on it. But there is also a lot of further detail which is there, which one should at least know कि हाँ और भी कुछ होता है. And Professor Saab, I think for you, I had just those two questions about can we estimate the mass of the elements which have been found, or is it only finding the presence? And I think this mission is just 14 days. It's got a lifetime. इसका ये भी mission नहीं है कि they will carry back any samples to the earth. I think that is clear. So एक ये बात है जो आपने slide दिखाया था, the life mission is only 14 days. So हमें लगता है कि स्टूडेंट को लगेगा 14 दिन के लिए इतनी सारी मेहनत करी, 14 days में वो सारा खत्म हो जाएगा. So is that if you can probably throw some light on that. I hope my questions were clear and yes sir, your question were very much clear. So your first question is कि mass का estimation of titanium या other elements का हो सकता है. अभी शायद ऐसा कुछ हम लोग envisage नहीं कर रहे हैं. अभी सिर्फ presence हमने ढूंढा है. Now we would be working more on this aspect, and let's see अगर कुछ density का idea हमें मिल जाए, rocks में कितना density है और कितना titanium वगैरह उसके अंदर होगा, then definitely we can explore this kind of a thing. But अभी चंद्रयान से जो भी डेटा आया है उसमें as such मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. But it's a very good thing कि हाँ अगर मास का estimation हो
तो हम फिगर आउट करेंगे कितना टाइटेनियम वहां पर प्रेजेंट है, और फ्यूचर में अगर उसे टाइटेनियम को प्लैनेट अर्थ पे लाना हुआ तो हम उस बारे में सोच सकते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, 14 डेज मिशन. यस, 14 डे मिशन, 14 दिन के लिए इतने ऑलमोस्ट मोर देन 600 करोड़ रुपीज वी हैव स्पेंड. सो यस, वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, एंड ये 14 दिन का मिशन डेफिनेटली बहुत शॉर्ट मिशन है, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. सेकेंडली, अभी वो स्लीप मोड में है चंद्रयान जो रोवर है, एंड और उसको ऐसे प्लेस किया गया दैट 14 डेज के बाद, on September 22nd, when the sunlight actually comes, the battery of that rover is going to charge, and we hope कि वो फिर से काम करेगा, and we are going to not only reproduce these results, we may be getting some more new results. So definitely ये 14 दिन का प्लानिंग तो है, बट टू स्टार्ट विद हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो जरूर करनी पड़ेगी. और अगर ये फिर से 22 सितंबर को जागा तो इट वुड बी अ वेरी मतलब वंडरफुल थिंग फॉर ऑल इंडियंस, फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, हम लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि सितंबर 22 को क्या होगा. एक और क्वेश्चन जो चैट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ बार बार आ रहा है, वो ये कि मून पे मूनक्वेक्स कैसे आ सकते हैं. मून पे मूनक्वेक्स डेफिनेटली मुझे भी लगता था कि नहीं आ सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट सरप्राइज मी कि वहां पे सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है. प्लीज रिमेंबर, साइंस इज इवॉल्विंग. साइंस न्यू फैक्ट्स के साथ चेंज होता है. पुराने टाइम में आपको याद है, अगर पहले हम बोलते थे अर्थ सेंटर है and everything else is moving around the earth, which is geocentric model. But then somehow people keep working, और उन्होंने बताया कि नहीं हमारे पास फैक्ट्स हैं. गैलीलियो ने भी बताया कि मैंने तो ऑब्जर्व करा है कि जुपिटर के मून्स अर्थ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो जुपिटर को फॉलो कर रहे हैं. सो समहाउ विद न्यू फैक्ट्स ह्यूमन हैव चेंज देयर साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्परमेंट हमारा चेंज हुआ है. तो डेफिनेटली अभी हमें ऐसा लगता है कि मून्स के ऊपर क्वेक्स नहीं हो सकते हैं, बट ये कुछ जो नया डेटा आया है, सेस्मिक एक्टिविटी आई है, डेफिनेटली इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर कि अगर ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. वी हैव टू थिंक. आई वांट टू कोट वन मोर थिंग. अपोलो 11 मिशन जो हुआ, वहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया, सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसे टच करके आना था कि हमें ह्यूमंस को भेजना है, नहीं. दिस वाज दैट वाज अ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन. वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरेशन क्या हुआ, जिसका रिजल्ट तो मैं देख के जब मैंने रीड किया उसे इतने सालों बाद, तो मैं बहुत हैरान था कि दे प्लेस रिफ्लेक्टर्स ऑन द मून, ऑफ द सरफेस ऑफ द मून, एंड अर्थ से हम लेजर लाइट फेंकते हैं, और वो लेजर लाइट या फिर माइक्रोवेव्स डालते हैं, वो माइक्रोवेव या लेजर लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, एंड वी कैलकुलेट द डिस्टेंस, एंड वी फिगर्ड आउट दैट एवरी ईयर moon is actually moving away from us, and it is moving with the speed of 3.5 या 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर. तो डेफिनेटली ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था. हम तो मानते थे कि मून बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पर है, मून हमसे दूर नहीं जा सकता, बट ये इंफॉर्मेशन आया, एंड देन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर ये है रिजल्ट, और बार बार रिजल्ट यही आ रहा है, एक्सपेरिमेंट में कोई एरर नहीं हो रहा है, तो वी स्टार्टेड ट्राइंग टू सी द रीजन, व्हाट शुड बी द रीजन, एंड वी फिगर्ड आउट द रीजन. द रीजंस आर द टाइडल फोर्सेस. वही प्लैनेट अर्थ पे जो टाइड्स आते हैं, दैट फोर्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कि मून हमसे हर साल 3.5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से दूर जा रहे हैं. ओके, सो डेफिनेटली सेस्मिक एक्टिविटी का जो डेटा हमारे पास आया है, ये बिल्कुल शुरुआती रिजल्ट है, और हमें इसको बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एंड हमें बिल्कुल आइडिया लगेगा कि मून के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, मून पे क्वेक्स होने तो नहीं चाहिए. दिस इज व्हाट आवर हाइपोथेसिस इज, बट क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है? तो वो रिजल्ट हमें उस सर्टेनिटी की तरफ लेके जाएंगे और बताएंगे हमें कि हाँ वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए वहां पर. Okay, so that is what my answer to this question. So science is always it's like keep exploring it. ये हमेशा चेंज होती रहती है. ऐसा नहीं है कि साइंस फिक्स हो गई है, नहीं, साइंस फिक्स नहीं है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. We have to keep asking questions, keep asking hard and difficult questions. और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, डेफिनेटली हम लोग नई चीजें एक्सप्लोर करते रहेंगे. बैक टू यू कृष्णा. there are some questions like अभी तक जो हमारा रोवर था उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है, कौन कौन से रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे पास? एक तो मैंने टेम्परेचर का आपको आइडिया बताया कि टेम्परेचर का मेजरमेंट किया है. एक एलिमेंट कॉम्पोजिशन का आइडिया लिया है उसमें कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये सेकंड चीज है. तीसरा, हमने कुछ स्टडी किया है कि उसके एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन कितना है.
लाइक मैग्नेटिक फील्ड में हम अर्थ पे जानते हैं नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, ऑरोरा लाइट्स आर देयर. सो क्या मून का भी मैग्नेटिक फील्ड है क्या, और वहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना है? अर्थ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन काफी हाई है, मून पे भी मिला है हमें. इट इज लाइक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 30 मिलियन पर मीटर क्यूब का इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, विच इज क्वाइट लो अर्थ के रेस्पेक्ट में. एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला है, देन एलिमेंट कंपोजिशन हो गया, देन हमने टेम्परेचर के बारे में पता कर लिया. आई गेस यही 3-4 एक्सपीरियंस. सेस्मिक एक्टिविटी, दिस इज द फोर्थ वन. सेस्मिक एक्टिविटी के बारे में पता चला है. शेप एक जो है डिवाइस जो प्रोपल्शन मॉड्यूल में है, उसका अब तक रिजल्ट हमारे पास आया नहीं है, तो उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है. Back to you, Krishna, sir. Thank you very much, sir. Somebody is asking like, does moon have silica? I think yes, ये डेटा शायद है. सिलिकन है, सिलिका आई डोंट नो. सिलिका के बारे में ऐसा मेंशन तो नहीं किया अब तक इसरो ने, बट सिलिकन डेफिनेटली शायद है. चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. Okay, thank you. So, Hello. is there any questions from the participants? They can raise hands. Hello. Am I audible, sir? Yes. We have questions for Sunny, sir. Mr. Aditya Bhatnagar have asked about the center of mass shift thing. Before moving to the answer, I would like to request other guest of honor, Dr. R.K. Dwivedi, sir. He has also experience of deep experience of physics learning as well. He's currently working as a principal in Nirmal International School. I'll request him to just give the feedback of the session and also put a brief question for Sunny if possible. Thereafter, we'll proceed to the answer from Sunny's end. Dr. R.K. Dwivedi, sir, are you there? Hello, can you hear me? Yes, sir, you are audible. Thank you so much. Thank you so much, Krishna sir. And it is really wonderful session by the children, by the SPART team. Especially, I would like to highlight the name Vaishnava and Aditya sir, Aditya Bhatnagar sir, Sunny sir, who's a very deeply explained the how does it is launched and what are the velocity and what are the energy conservation. So it's a good point of view for the children, especially understanding the concept of launching any satellite or anything away from the Earth. So basically, the concept of launching any satellite is based on the escape velocity as well as the three laws of motion and Kepler's law of planetary motion. So all that thing has been already discussed, so I will not discuss much more about this one. Yes, so far concerned knowledge sharing, it is a wonderful opportunity and platform which is created by you, Mr. Krishna, which is going to be a very useful for the children, those who are especially outskirt children, out area who are living in the outskirt area. They can connect now and learn a lot of things from you and from this platform. So I must thank to everyone. That's it from my side. When explanation is concerned, I will discuss in some other day because already many students are writing that time is over. So I will not take much more time. Thank you so much, sir. Thank you. Now I would like to thank you very much for your words, sir. Now I would like to invite Mr. Sunny for the QA session. Aditya Bhatnagar sir have asked about the shift in center of mass, basically because the mass of fuel is burning at time. Also, I would like to add one more questions, like when during the time of landing there is a reverse thrust which is basically slowing down the velocity, but during the rough break phase it is also traveling horizontally. It is kind of projectile motion. So when it is in the projectile motion, could you please let me know what will be the direction of gases
because if it is in the opposite direction, it will push the satellite with more speed in the forward direction, which will add to the horizontal speed, which we don't want. We actually wanted to basically decrease the horizontal speed as well as vertical speed. So in case of vertical speed, we can put a gases in the downward direction. But when it is going horizontal, where will be the direction of gases, basically velocity of gases? Over to you, Sunny, sir. I think Sunny is already left, so he's not there. So if hello Krishna. Yes, sir. Yeah, Sir, Sunny is Sunny is there. He is there. He's unable to mute. Could you please just check? No, he is not here. He is not here. He just messaged me, sir. Maybe by other name, by Sunny name, he's not there, but maybe he is. Just a second, I'm just checking. Okay. Sunny, sir, if you're there, please, could you please just raise your hand? So maybe in the meantime, sir, can you have give some remarks, Aditya sir? In conclusion, I mean, it was a concluding remark. Then, first of all, I want to thank Krishna and you for really putting together such a wonderful session. This is so fresh on people's minds, and students really don't know much about it. It's not only students in outskirts, even students in cities will not know a lot of things which are discussed out here. And it will be very nice if you think it is right, if we can share some of the presentations with the students who are here, so they remember some of the things which have been said, both the students' presentation as well as that by Sunny and by Professor Sir. So it'll be really fantastic if we can do that. And I hope, we have more sessions like this on other topics as well, which will integrate the thinking in a scientific manner. Thank you very much for having me as part of this session. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. So maybe due to some problems, Sunny is left. Krishna, if you have some other questions, because time is already 7:43 p.m. So maybe if we don't have any questions, then we can continue, or maybe we will organize some other webinar like this, so that students will be getting some more knowledge about space and all the things. Okay. Sir, just a minute. We'll wait for 1 more minute for Sunny sir to join. Meanwhile, could Amit Tanwar sir just give a concluding remark for 1 or 2 minutes? Thank you so much for inviting me for this wonderful thing. मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि 11th क्लास के बच्चे और 12th क्लास के बच्चे अगर हैं तो उनको कैसे मैं मतलब इतना ऐसा टॉपिक कराऊंगा, बट वैष्णव को सुनने के बाद तो मुझे बिल्कुल इतना कंफर्टेबल लगा कि नहीं, ये बच्चे जब इतना अच्छे तरीके से बता सकते हैं तो डेफिनेटली मेरे लिए तो डिफिकल्ट होना ही नहीं चाहिए. तो वैष्णव ने तो बहुत अच्छे से बताया. वैष्णव, गुड वर्क. एंड सनी सर ने जो बताया, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है सनी सर ने जो आज इन्फॉर्मेशन दी है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. एंड डेफिनेटली आई लव्ड इट. मुझे बहुत ही मजा आया. एंड मैं देख के भी हैरान हूं कि स्टूडेंट्स आर आस्किंग सो मच क्वेश्चन. एंड व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन ना, जब आप सवाल कर रहे हो, एक्चुअली इस वर्कशॉप का, इस सेमिनार का, इस टॉक का पूरा ऑब्जेक्टिव ही अटेन हो जाता है कि हम आपको इस मोड पे ले जाके छोड़ें कि आप सवाल कर सको. और सवाल अगर करोगे तो जवाब ढूंढोगे, और जवाब ढूंढोगे तो आप साइंस को लर्न करोगे. So that is the wonderful thing that had happened. And thank you so much for inviting me. Thank you, everyone.
Thank you very much, sir. I believe we are able to do a part of from our end for the students. We were basically waiting for Sunny sir, but I don't know, there was some technical glitch because of which he is not able to join. Probably will some other time we'll try to connect him again with the student. I'm really grateful for all the honorable members, Mr. Aditya Bhatnagar sir, Dr. R.K. Dwivedi sir, and our partners, TWD Global Academy and Nirmal International School, and all the colleges that were that basically collaborated with us to make this workshop happen and reach to maximum students. Specifically when Aditya sir told that many such workshops should happen. We'll try that if possible, and if Amit sir agrees, we'll make this a series like wonders of physics workshop in different fields, like let's say in the field of communication or in the fields of robotics. So we will definitely keep this a series basically, and we'll try to reach maximum number of students so that they know the basics of physics and are able to build a better tomorrow. With this, I would like to give away a vote of thanks to everyone present here. Thanks a lot, and see you some other time in some other wonderful workshop. Thanks a lot. So It's over from my side. okay. Yeah, there is only last question. Some student asked like, what is the difference between Chandrayaan 3 and Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3? So just a small difference I wish to say, like there are 4 solar panels in Chandrayaan 3. So that अगर वो गलत डायरेक्शन में भी उतर जाता है तो वो अपना एनर्जी ले सकता है, जबकि चंद्रयान 2 में खाली 2 सोलर पैनल्स थे. सो ऐसे ही क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं कि भाई डिफरेंट स्टूडेंट्स जब पूछ रहे हैं, जैसे कि अभी भी हमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे सुनाई दिए और हमें भी नहीं पता था, उसके आंसर भी हमें मिले. सो थैंक यू वेरी मच. और जैसे कृष्णा ने कहा कि हम लोग आगे भी वर्कशॉप करते रहेंगे. सो ऑल्सो जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, जो ऑनलाइन प्रेजेंट हुए हैं, सबको हम लोग सर्टिफिकेट जो है विद इन ए वीक सेंड कर देंगे. सो थैंक यू वेरी मच. वी विल बी इन टच. और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और हम सनी सर बाकी लोगों से पूछ के भी अगर एग्री होंगे तो हम आपको उनका प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर देंगे. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आवर पार्टनर्स MMH कॉलेज गाजियाबाद, काशीराम कॉलेज गाजियाबाद, मेरठ कॉलेज मेरठ, RG कॉलेज मेरठ, CCS यूनिवर्सिटी, स्टार्स लैब, Hindu College, TWD, NEEV, and all the other who are involved directly or indirectly. So thank you very much. Hope to meet you soon. Thank you. Just a last information for every participant. We'll be forwarding a feedback form in which you can post your queries. We'll forward these queries to the expert and we'll try to get the answer via mail if possible. So please do fill the feedback form if in case you have any queries, because I know there's time constraint, but we'll try to answer all the queries of every student via feedback form. Please fill the feedback form. We'll share the feedback form via mail as well. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you.